Hello everyone, this is Sumit and welcome to Petrogate PYQ series, and in this session we are going to start a new topic or new subject, and you know very well what about the PYQ series. In this series we will discuss your previous year questions paper. Okay, no problem. So what about this session? Okay, what about this session? In this session we will discuss the questions which has been asked in GATE 2016 and that is related to your formation evaluation. Okay, no problem. So now we are going to start, my dear. Okay, so now without wasting our time, let's start. So you can see the question number 1, which of the following is preferred fast neutron source in neutron logging? Okay, so क्या न्यूट्रॉन log में मुझे न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है क्या? Okay, is there any requirement of neutron in neutron log? Yes, definitely, because my dear you can see my dear कि if I'm talking about कि neutron logging you can talking about, so definitely there will be some neutron, okay, and there will be some application of neutron. Or now I'm telling you what happened. This is your formation, okay, valbore. This is your valbore, and in this valbore what we are doing, suppose this is your tool and the tool will send your neutron into the formation, and that neutron will react and collide with the hydrogen nuclei and loses their energy. ओके, न्यूट्रॉन क्या होगा, हमारे फॉर्मेशन के अंदर जाएगा और वो टकराएगा हमारे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से और अपनी एनर्जी को लूज करेगा. लिसन, और लूज देयर एनर्जी. ओके, और जैसे जैसे उसका टकराव होगा ना तो उसकी एनर्जी लूज होती चली जाएगी, एंड एज द कोलिजन विल टेक प्लेस द एनर्जी विल लॉसेस ऑफ द न्यूट्रॉन. ओके, नाउ यू कैन से जैसे जैसे टकराव होगा, एंड यू कैन से इफ द नंबर ऑफ, लिसन, इफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज हायर, so definitely the nucleus of hydrogen atom is higher and the collision will be higher. Okay, जो मेरा न्यूट्रॉन होगा वो टकराएगा, वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन अगर कंसेंट्रेशन होगा तो मेरा टकराव जो न्यूट्रॉन का होगा वो बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो इट मीन तो एनर्जी मेरी लॉस होगी, जो एनर्जी मेरी लॉस होगी वो बहुत ज्यादा होगी मेरे भाई. ओके, तो एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई लॉस और यू विल सी, ओके, इन न्यूट्रॉन. ओके, नो प्रॉब्लम. तो इट मीन्स द न्यूट्रॉन वॉट एवर you are getting at receiver, you will see it's a transmitter, it's a receiver, you will see there is a very less number of neutron you are getting at the receiver. It means, okay, so इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, थोड़ा इन शॉर्ट में देख लीजिएगा. इससे कंक्लूजन मुझे ये मिल रहा है कि अगर मुझे लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे रिसीवर पे मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट द रिसीवर, इट मीन्स देयर वुड बी हायर लॉस. ओके, देयर वुड बी हायर लॉस. No problem. If losses is higher, so definitely the hydrogen concentration would be higher. Okay, no problem. So it means higher concentration of hydrogen will be higher. Okay, तो hydrogen किसके फॉर्म में रह सकता है? Hydrogen in which form? In the present in the pore space. Definitely that will be in the form of H2O. That would be in the form of hydrocarbon. Okay, no problem. So hydrogen हमेशा इसके फॉर्म में मेरा यहाँ पे रह सकता है, मे भी गैस की फॉर्म में भी रह सकता है. Okay, तो ये कहाँ पे रहेंगे? ये कहाँ पे रहेंगे? These hydrocarbon और H2O will be in your pore spaces. Okay, so it means hydrogen concentration higher, so it means porosity is higher. So okay, so I can relate this point to this point, okay, without getting information about these. Okay, so we can conclude कि सर अगर मुझे ज्यादा less neutron at the receiver I am getting, so it means the porosity is higher, and if you are at receiver you are getting more neutron, so it means your porosity is very very less. Okay, so you get this conclusion. Okay, and according to this conclusion you will reach to the porosity value with the help of neutron. Okay, in fact porosity लोग तीन तरीके के हैं, न्यूट्रॉन, डेंसिटी एंड सोनिक. तीनों में मैं पोरोसिटी तक पहुंचता हूं, बट पहुंचने के रास्ते मेरे अलग अलग हो सकते हैं. न्यूट्रॉन में मैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को मेजर करके पोरोसिटी तक पहुंचता हूं, डेंसिटी लोग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करके मैं पोरोसिटी तक पहुंचता हूं, सोनिक लोग में मैं ट्रांजिट टाइम को मेजर करके पोरोसिटी तक पहुंचता हूं. बट मेरा टारगेट पोरोसिटी जो लोग है, जो पोरोसिटी लोग है, यू विल सी द पोरोसिटी लोग मेजर योर पोरोसिटी, एंड देयर विल बी 3 kind of porosity log: neutron, density and sonic.
and each and every log measure porosity because of different measurement. It measure hydrogen concentration, it measure electron density, it measure transit time, but measure ultimate the result you will get from these three logs is your porosity. Okay, no problem. But हम लोग बहुत आगे पीछे चले गए, इस क्वेश्चन के बहुत आगे पीछे चले गए. तो सिंपली इन शॉर्ट लेट्स सी द क्वेश्चन कि सर जो न्यूट्रॉन whatever the neutron you are transmitting from the transmitter in the neutron log, so वो जनरेट कैसे होगा, वो जनरेट कैसे होगा, how you will get the neutron, how you will get the neutron in your logging neutron tool. Okay, no problem. So now you will see, my dear, the neutron source in the logging there will be two kind of element. Okay, there will be two kind of element. Either one kind of element you will see americium, and next is your plutonium, and the third one is your radium. Okay, and the second element you will see, my dear, it's a beryllium. Okay, it's a beryllium 9. So now you will see you have to take two element, one of this, and the second element either you will take this, either you will take this, either you will take this. Okay, so इनमें से मुझे एक चाहिए प्लस और ये मुझे हमेशा चाहिए. तो जब ये इसमें से रिएक्ट करेगा तो मुझे न्यूट्रॉन दे देगा मेरे भाई, तो ये मुझे न्यूट्रॉन दे देगा. Okay, so now you will see the reactions. Okay, now you will see the reaction, my dear. You will see the reaction. Okay, reaction in you will see the reaction कि beryllium, I am taking the example, beryllium will react with the alpha particles. Okay, alpha particle, and alpha particle, how you will get the alpha particle, sir? Alpha particle you will get from either this, either this, either this. Okay, तो इनमें से किसी से भी एक alpha particle ले लीजिए और whatever the alpha particle you are getting from these, इनमें से कोई भी एक होगा और वो मेरा रिएक्ट करेगा beryllium से और मुझे न्यूट्रॉन मिल जाएगा मेरे भाई. ओके, यू विल गेट द न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रॉन मेरा फॉर्मेशन के अंदर जाएगा और वही फॉर्मेशन के अंदर जाके उसी को मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर पे ले लूंगा. No problem. Okay, so now the thing is that sir कि there is a 1 2 3, इनमें से मुझे एक चाहिए जो मुझे अल्फा पार्टिकल देगा, and that alpha particle will react or collide or reaction with the beryllium. So beryllium 9, so you will get the neutron. No problem, sir. No problem, sir. Now the question is different here. Question is different, sir. कि which of the following prefer the fast neutron source? Okay, fast neutron source. So can you see the option? So americium or beryllium, either you can take this or either you can take beryllium. So this combination you can take, no problem. Either you can take this combination also, plutonium and beryllium. Okay, and either you can take the combination radium or beryllium. Okay, तो इनमें से कोई एक, और ये हमेशा चाहिए ही होगा, तो वो मुझे न्यूट्रॉन दिखा सकता है और दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए अमेरिसियम और बेरिलियम एक कॉम्बिनेशन है, यू आर गेटिंग द अमेरिसियम और बेरिलियम कॉम्बिनेशन, तो इट मींस दिस कैन बी अ राइट ऑप्शन. ओके, नो problem. Let's see the another option also, radium and beryllium. Radium and beryllium also you can take for neutron emission, so it means this also can be a right option. Deuterium and tritium, no, this will not the right option, and thorium and beryllium, this is not the right option. Okay, so right option is either this or either this. Okay, sir, this is the two option is correct, this is not the multiple selective question, this is the MCQ. Okay, now the thing is that, sir, he is talking about the fast neutron, that you have to remember कि if you are taking americium and beryllium you will get very high neutron, very high energy neutron. If you are taking plutonium and beryllium, then that will be your medium energy neutron, and if you are taking radium and beryllium, then you will get low energy neutron. Okay, so you have to also think about this. Okay, so whatever you will see, you can see कि if you are going this side to this side, so your energy of neutron, whatever you are emitting in the neutron log, that will be higher to lesser energy. Means this combination and this combination gives the higher energy, and this will give the medium, and this will like give you the low energy. Okay, no problem. So fast neutron will be means high energy, so definitely your option will be americium. Okay, now no problem. So this is the right option will be option A will be right option. Okay, no problem. Now the question is, there is two things that you have to remember. Okay, the first thing is that which matter, which element you can take to emit the neutron. Okay, and the second thing is that
कि if you are taking this one and this combination, then what is the energy of the neutron, whatever you are emitting from the neutron low. Okay, तो ये भी हम लोगों को चीजें देख लेना है. ठीक है, मैंने दोनों चीजें बता दी हैं कि ये चीजें लेने पे न्यूट्रॉन निकलेगा और कौन सी चीजें लेने पे कितना एनर्जी का न्यूट्रॉन निकलेगा, तो वो चीजें मैंने बता दिया. नो प्रॉब्लम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन. You know, this graphical kind of question is my favorite question every time. Okay, so now the thing is that, sir, this is your question. This question says, my dear, and I'm taking the blue or like pink color. Okay, no problem. So using the gamma ray log index, gamma ray log given, there is a graph or traces is given of the gamma log. You can say gamma log and gamma radiation measure in API. Definitely this can be the question also, and the unit you can say API 0 to 100 example you can take, and depth you will give this kind of depth, no problem. Using the gamma ray log given the figure, the saliness index for the point S, this is your saliness index. I have to calculate saliness index. Okay, saliness index मतलब कि सेल वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, सेल वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, एंड आई हैव टू कैलकुलेट सेलिनेस इंडेक्स और सेल वॉल्यूम इन परसेंटेज. नो प्रॉब्लम. ओके, तो पहली चीज तो मुझे ये बताइए, जस्ट टेल मी द फर्स्ट थिंग कि जो गामा लोग है, जो वट एवर द गामा लोग यू आर हैविंग, व्हाट मेजर द गामा लोग. गामा लोग इज ए लिथोलॉजी लोग. ओके, एंड वेन एवर यू आर हैविंग योर सेल लोग, सो गामा रे लोग रेस्पॉन्स इज हायर. ओके, आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस इज योर लेयर, so different layer, suppose this is your sandstone layer. Okay, no problem. This is your shale layer. Okay, no problem. This is again your sandstone. Okay, so if I'm making the graph of this particular lithology and layers or strata, so sandstone के टाइम पे मेरा जो ग्राफ होगा गामा रोग का, that will be very very less value you are having, very less value. Okay, and now if I'm talking about like cell layer you are having, so cell layer has the high natural radioactive element और which emit the radioactivity, और जो कि गामा रे मेजर करता है. तो जैसे यहाँ से रेडियोएक्टिव मुझे रेडिएशन मिलेगा तो मेरा रेस्पॉन्स अच्छा खासा जाएगा. नो प्रॉब्लम. ओके, फिर सैंडस्टोन लेयर आ गया, तो इट मींस देयर इज अ लो रेस्पॉन्स. ओके, एंड अनदर लेयर विल बी योर सैंड. लिसन, इट्स ए मेन पॉइंट, सैंड प्लस सेल कॉम्बिनेशन. So sand layer says to be this zero line and sage layer says to be this higher line. So there will be the combinations will be like that कि जो response मुझे मिलेगा वो कहीं इस बीच में मिल जाएगा. ना तो वो सेल का रहेगा जो कि 100% पे है, ना ही वो सैंड पे रहेगा जो कि 0% पे है. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इनके बीच में रेस्पॉन्स मिल जाएगा. एंड दैट रेस्पॉन्स विल डिपेंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर सेल यू आर हैविंग 50%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर सैंड यू आर हैविंग. ओके, अगर आपके सैंड फॉर 50% पे है सैंड और सेल, तो आपका रेस्पॉन्स 0 और ये 100 अगर था तो यहां पे 50% पे मुझे मिल जाएगा. इफ योर सेल रॉक, लिसन मी केयरफुली, इफ योर सेल रॉक इज 70% यू आर हैविंग एंड ओनली द 30% योर सैंड रॉक, तो इट मींस डोमिनेंसी किसकी हुई, सैंड की, सेल की हुई. तो सेल लेयर जो है वो मेरे रेस्पॉन्स को 100 की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेगी. तो इसका मतलब इस बार किसकी चलने वाली है, इस बार इसकी चलने वाली है. तो ये रेस्पॉन्स जो है मेरा, ये रेस्पॉन्स मुझे इधर की तरफ मिल जाएगा, 70 पे मिल जाएगा. लिसन मी केयरफुली सर, यहां पे देखिए फील आने वाला है, 70 पे मिल जाएगा. यू आर गेटिंग द रेस्पॉन्स एट 70 वैल्यू. ओके, 70 API वैल्यू. ओके, if sale value is 100, you will get the 100 value, sorry 80, and if your sale percentage 90%, so you will response will 90%. If this is 100, this will be your 0. It means it will be your pure sale. It means this kind of sale. It means your response will be 100% like this. Okay, so simple formula is that. Okay, now the thing is that, sir, if you want to calculate the volume of cell anywhere, so definitely you will say, sir, the response is 850, so it means 50% volume of cell. Arey my dear, this will be possible when the maximum deflection is at your 100 or minimum deflection 0. So then you can say whatever the value of cell graph you are having, so that will be your volume of cell.
ओके सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे 70% ग्राफ 70 एपीआई वैल्यू आ रही है मेरी गामा की, तो इट मीन शेल वॉल्यूम मेरा 70% हुआ और 50 आ रही है तो 50% हुआ, यही तो आपने बताया मुझे अभी। लेकिन ये तभी तो पॉसिबल है भाई जब 0 पे मेरा मिनिमम होगा और मैक्सिमम मेरा 100 पे होगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है क्या? नहीं है। मैक्सिमम मेरा जो वैल्यू है वो 90 पे गया है और 100 और मिनिमम मेरा 10 पे गया है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकता। ओके हालांकि मेरे आंसर का आइडिया लग रहा है कि सर योर आंसर विल बी एज वैल्यू आई यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज, सो योर आंसर विल बी अप्रोक्स 70 काइंड ऑफ परसेंट, 72, 73 or 70%, बट दिस विल बी पॉसिबल व्हेन 70% विल बी पॉसिबल व्हेन मैक्सिमम वैल्यू एट 100 और मिनिमम वैल्यू एट 0। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से, रटने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आई विल टेल यू विद ए वेरी सिंपल वे, वेरी यू विल सी द कॉमन सेंस यू कैन यूज। ओके नाउ यू विल सी कि जब ये डिफ्लेक्शन होता है, सो इट रिप्रेजेंट व्हेन द डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, सो इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सेल। If little deflection you are having, suppose this deflection you are having, so it deflection because of only the sail. This deflection is because of only the sail rock. Okay. Now the thing is that sir, if I want to calculate volume of sail, listen me carefully. बहुत basic सा एक formula बना के दूंगा आपको. Volume of sail I want to calculate. So what can be the deflection you are having? Okay. What is the deflection you are having? Your deflection means your gamma ray response at log whatever the point, at what point you want to calculate the volume of sail, तो वहां पे gamma ray log का response क्या है? तो you can see this, okay, you can see this gamma ray log minus and minimum क्या response है? तो this will be you are get the 50. Okay, no problem. So you can say gamma log response minimum क्या है? Okay, minimum क्या है? और minimum मतलब sand बोल दो. You can take the minimum response, you can take the sand response, you can take the clean formation. Clean मतलब also sand. No problem. So this response you are getting because of the shale rock. And what can be the maximum deflection in pure shale rock? In pure shale rock, this maximum deflection you can say. Okay, so it means this point is what? Gamma ray shale layer, and this is what? Gamma ray again minimum. So you will see the gamma ray shale rock and minus gamma ray rock in sandstone or clean or minimum. No problem. So this can be the formula. ठीक है, तो ये सिंपल सा ऐसा हो गया कि सर आपका इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आए हैं और यू वांट टू कैलकुलेट इन परसेंटेज एंड मैक्सिमम मार्क्स आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते थे। सर मिनिमम इंटर में मेरे 50 मार्क्स आए हैं और मैक्सिमम आई कैन एक्यूमुलेट इज 100। सो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स? सिंपल। Okay, so now you will get the volume of sale. Okay, so now but just come to this particular point. Now I'm taking a different color here. So now you will see कि volume of sale, my dear, volume of sale equal to at this particular point what is the gamma ray response? At this particular point what is the gamma ray response? That is your 70. What is the minimum? Minimum there will be 10. Okay, what is the maximum gamma ray response in shale rock? Maximum you can also say this is your maximum because maximum in shale rock. Okay, no problem. So now you will see maximum is 90. Maximum is 90 minus minimum, again you can see the 10, and I have the calculator. Now I am doing the calculation for you. 70 volume of sale equal to, this will be your 60 by 80. No problem. So you will see 60 by 80. It's a very simple question. Volume of sale equal to 0.75. Okay, 0.75. So it means 75% वॉल्यूम ऑफ सेल है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 100% सेल है, यहाँ पे 0% सेल है और 100% सैंड है। आई थिंक यू गोट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो राइट आंसर, मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू कि द आंसर विल बी नियर अबाउट 70, क्योंकि यहाँ पे 90 और 10 गिवन है। अगर यहाँ पे 0 और 100 गिवन होता तो 70 आंसर होता मेरे भाई। तो यू विल सी द राइट ऑप्शन विल बी, यू विल सी द राइट आंसर माय डियर 70%। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर वो यहीं से आपसे बोल दे कि सर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो you will see what? You can say 75% sand, so that means definitely 25% will be sandstone. Okay, no problem. बट मैं ऐसे भी कर सकता हूं, सिंपली मैं ऐसे भी कर सकता हूं। सपोज दिस इज योर वैल्यू इज 75, ओके,
एंड नाउ दिस वैल्यू बिकॉज ऑफ व्हाट, जो कमी आई है डिफ्लेक्शन में वो किसकी वजह से आई है, सैंडस्टोन की वजह से। गामा लोग में डिफ्लेक्शन देयर विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ सेल, एंड जो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ दैट बिकॉज ऑफ सैंडस्टोन और परमेबल फॉर्मेशन। ओके, सो नाउ यू कैन से कि जो डिफ्लेक्शन में कमी आई है वो किसकी वजह से आई है, वो कमी आई है सैंडस्टोन की वजह से। सो आई वांट टू कैलकुलेट सैंडस्टोन वॉल्यूम और सैंड वॉल्यूम। सो इट मीन्स वट एवर द कमी यू आर हैविंग एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कमी यू कैन हैव। समझ रहे हो ना, what can be the reduction of your gamma ray log, that is you can say that will be suppose 25 or maximum reduction you can see that will be 100, so you can say directly 25%. Okay, I think this is common sense kind of thing. अब ऐसे भी कर सकते हो, then first you can calculate volume of cell, then you can go to the calculation for sandstone volume, no problem, but यहाँ से भी आप directly अंदाजा लगा सकते हो। Okay, you can see ना, there will be 70. And this reduction, why the reduction you are having? Because there will be rock which is the mixture of sand and shale. Sand कह रहा होगा कि वो डिफ्लेक्शन जाए, sand कह रहा होगा डिफ्लेक्शन ना जाए। So जो डिफ्लेक्शन नहीं गया, whatever the reduction you are having, that will be because of sand. So you can take sand volume also. कि this part is what 70-90 means 90-70 reduction means that will be your what 20. And what can be the maximum reduction? Maximum reduction this point to this point. What's this point? This will be your 90. So you will get what? I am having the calculator. You will get what? 20 by I think 20. This will be what? 90 or minus 10. It will be 80 na? It will be 80. So divide by 80. So you are getting like 25%. ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे भी कर सकते हो। आई थिंक तुम्हें फील आ गया होगा चीजों का, ठीक है। रटना नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन तुम्हें फील करना है, ग्राफिकल चीजें सोचनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट माय डियर। This is the next question you will see. Identify the logging device. Okay, I have to identify the logging device, my dear. Okay, and there are the example of logging device like nuclear magnetic resonance, NMR, neutron, induction gamma, or like thermal neutron decay. Number of tool you are having. So he is telling us कि we have to identify the device that is based on the concept of longitudinal and transverse relaxation time. Okay, means longitudinal relaxation time and transverse relaxation time. In which logging tool we are reading or we study? डेफिनेटली NMR लोग माय डियर। ओके, थर्मल न्यूट्रॉन डिके में कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडक्शन गामा लोग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इंडक्शन और न्यूट्रॉन लोगिंग में तो ऐसा, इनफैक्ट मैंने डिस्कस कर भी लिया है न्यूट्रॉन में क्या होता है, तो उसमें कोई टाइम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट, देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट इन गामा लोग, देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट इन थर्मल न्यूट्रॉन डिके। दैट विल बी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मीन एन NMR you will have the concept of like T1 and T2. Okay, and we have discussed NMR log with full detail in our lecture series, but अभी के लिए, but in sort of time I will tell you the basic thing कि what we will do basically in NMR log. You will see कि basically if you are having this particular like for well bore, and this is suppose zone, and in this particular zone you are having some fluid in the pore spaces, and that fluid having the nucleus and the nuclear and proton, and these are like proton will be rotation randomly. Okay, and first what we are doing, these are the suppose in pore space you are having the nucleus, okay, and or you can say the proton. Okay, so what you are seeing, this is your like logging tool or NMR tool. In NMR tool we are giving the B note, in one direction, then the rotation of initially the rotation of all the proton will be random. Some direction is this, so which some proton having the direction this side, some proton having the direction this side, some proton having this side. Okay, so randomly they are rotating. Okay, and like if I'm talking about, sir, and each proton have because of this rotation having some own magnetic field, that will called a very small magnetic field, that is your M1, you can say M2, you can say M3, M4, M5, M6. Okay, no problem. So what we are doing, we are giving the magnetic field in this particular direction. Okay, so all the proton rotation will be in the same direction now, So what is the time? But suppose I am giving some time, listen me carefully, I am giving some time, suppose magnetic field value is 5.
okay, and each magnetic field of each proton having very less, like point, like what, like this is 0.1, point also 1, 0.1, 0.1, 0.1, okay, no problem, very small value of magnetic field. Okay, so whenever you are having this B naught value and you are giving the magnetic field towards like this direction, so what happen, all the proton direction will be this side. Okay, so now you will see your magnetic field or total magnetic field, you will see higher, total magnetic field will be higher, means the magnetic field value of this particular whatever you are giving plus all the magnetic field value like m1, m2, m3 means all the proton magnetic field. Okay, जैसे सारे प्रोटॉन इस साइड में अलाइन हो जाएंगे तो मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, एक तो वो जितना मैं दे रहा हूं प्लस ऑल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉल प्रोटॉन्स, ठीक है, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट ऑल द प्रोटॉन शुड बी अलाइन इन माय मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, सो इट विल टेक डेफिनेटली टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपने झट से बी नोट दिया एंड ऑल द प्रोटॉन विल अलाइन टुवर्ड साइड, ओके, सो दैट विल बी टेक लिटिल बिट टाइम, ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू विल सी आई हैव द ग्राफ फॉर यू माय डियर, यू विल सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ, मींस जैसे सपोज 5 मैग्नेटिक फील्ड यू आर गिविंग, ओके, एंड ओनली 10 प्रोटॉन इज अलाइन, तो इट मींस देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड विल ऐड लाइक 6, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 6, okay, then after some time 10 more proton will align in the same direction, so your magnetic field will be total will be 7. Then again your magnetic field will add because 20 or 50 more proton will align in the same direction, so your magnetic field 8, 9, 10, so it will be increasing. Okay, so what I will see as your time is increasing, so your magnetic field will be increased. Okay, means first this is the first value of magnetic field, then the value of magnetic field increase, you will see this kind of, this arrow size is increasing. Okay, so magnetic field increasing or time is increasing, so can I say कि I am doing a polarization kind of thing? Okay, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि मैं all the proton को polarize कर रहा हूं in the one direction? Can I say yes? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको polarization time. Okay, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं polarization time, और इसलिए मैं इसको बोल देता हूं यहाँ पे longitudinal time. This is your T1. ओके, और यहां पे मेरा ये ग्राफ बढ़ता चला जाता है, ओके, सो व्हाट आई विल सी कि दिस इज योर, यू कैन से 100% रिकवरी ऑफ, मींस 100% प्रोटॉन विल अलाइन पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ माय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू विल सी कि सर व्हाट द वैल्यू ऑफ T1। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है सर T1 क्या होता है। T1 मेरे भाई ये नहीं होगा कि द टाइम एट व्हाट टाइम योर 100% पोलराइजेशन टेक प्लेस, दैट इज नॉट योर टाइम T1। आई एम टेलिंग यू, समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो, ओके, जब 100% पोलराइजेशन पूरा हो जाएगा वो मेरा T1 बोलूंगा क्या मैं इसको? नहीं भाई, नहीं, आई विल नॉट से दैट इज योर T1 व्हेन द 100% पोलराइजेशन टेक प्लेस, दैट इज नॉट द T1. T1 is what when your 63% polarization take place. This is your 63%, so this is your called 1, so this is your called T1. ओके, और मुझे हमेशा इस T1 को ही स्टडी करना होता है। आई ऑलवेज ट्राई टू स्टडी व्हाट अबाउट द T1 वैल्यू, कि एट व्हाट टाइम योर 63% पोलराइजेशन टेक प्लेस, दैट इज योर T1 एंड दैट आई विल कंसिडर टू गेट माई रिजल्ट फ्रॉम द NMR log. Okay, no problem. So now you will see this is your 100% polarization, this is your 95% polarization. Okay, and one more thing you can see कि the time of 63% polarization, okay, equal to, and time T1, I am writing that time T at 63% of polarization equal to time f 95% of polarization. Okay, this time will be 3 times of this, so it means I am writing of this equation. Okay, so now you can say this is your T1, and after T2 and after T3 you will get the 95% polarization. Means if I am doing the multiplication of this time, means suppose you have 1 second, 2 second, 3 second, so if I multiply by 3,
in this T1, so you will get 3 seconds. So in this 3 seconds, you will get the 95%. Means this. Suppose this time is your 2 seconds. This time like 4 seconds, 6 seconds. Okay. So I am getting this, sir. There is a 63% polarization take place at 2 seconds. Then what will be the polarization take place 95%? So you will see multiply by 3, means you will see 6 seconds. Okay, now you can see at T into 3 into T1 recovery 95%. Okay, no problem. So मुझे इस बारे में नहीं ज़्यादा देखना है. I इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I will see कि सर T1 and T2 concept is just based on the NMR log, not any other kind of logging tool. Okay, sir, now what about the T2? T2 means transverse time. Okay, no problem. I'm telling you. Suppose you give the like magnetic field, that is your B naught, and all the proton will align this side. No problem. Okay, now after given B naught time, I will give the another magnetic field that will called a oscillating magnetic field and representing by B1, that is your B naught, and this oscillating magnetic field has the high intensity and this will be the perpendicular of B naught. This will be the perpendicular of B naught. Means जैसे मैं B1 दूंगा इस फॉर्मेशन में और ये मेरा कंटिन्यूसली चल ही रहा है, तो मेरे सारे के सारे प्रोटॉन परपेंडिकुलर हो जाएंगे और मेरे उसी के डायरेक्शन में चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में मेरा B1 लगा हुआ है, और जो कि बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए लगा हुआ है. सो इफ आई एम गिविंग दिस वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम मिलीसेकंड एंड द डायरेक्शन ऑफ B1 डायरेक्शन, B naught डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन एंड B1 डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ऑफ B naught. Okay, so because of this I have applied, all the proton is aligned this direction, and B1 I am giving. Okay, B1 I am giving, so that is your perpendicular of B naught, so all the proton will be moving this direction. Okay, and this is very short of time. So when I remove the B1, all the proton will be returning back to the original location, which is the direction of B naught. ओके, हिंदी में समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में भाई, कि जैसे B1 मैंने लगा ही रखा था, B1 भी लगा दिया, B naught लगा ही रखा था और B1 भी लगा दिया जिसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर बी नोट के, तो मेरे सारे के सारे प्रोटॉन लालच में आके क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे और मेरा ये लालच वाला मैग्नेटिक फील्ड में झट से हटा लूंगा और फिर से मेरे ये परपेंडिकुलर जो हुए हैं प्रोटॉन वापस मेरे बी नोट की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे. जितने भी टाइम में, एट व्हाट टाइम दे आर, दीज परपेंडिकुलर प्रोटॉन विल बी रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन और बी नोट लोकेशन, बी नोट डायरेक्शन. सो दैट व्हाट इज द टाइम टेकिंग, so that is called your T2. That is your called T2, and this is also called a relaxation time. Okay, so this is called a relaxation time or transverse relaxation time. So it means there is a T1 and T2 concept will be in your NMR log. This is your simple answer. Okay, इसमें मुझे देखना भी नहीं था, इसमें बच्चों को कुछ देखना भी नहीं था, ओनली सी कि ट्रांसवर्स लोग ये रिलैक्सेशन टाइम की बातें की हैं, तो भाई ये आंसर हो गया. ठीक है, कुछ भी नहीं करना भाई, बट मैंने ज्यादातर बातें इनकी कर दी है. ठीक है, तो यू विल सी यू आफ्टर गिविंग परपेंडिकुलर लाइक B1 मैग्नेटिक फील्ड, बट आफ्टर रिमूविंग दिस B1 यू विल सी कि सारे प्रोटॉन मेरे वापस वहां से हटके अलाइन हो जा रहे हैं B नोट की डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं डीके इंडेक्स. ओके, हालांकि ये चीजें डिस्कस कर रखी है हम लोगों ने, यहाँ पे भी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. Okay, answer will be D. Okay, no problem. Now the next question is that, okay, in this question you will see in sonic log, sonic velocity in the formation, my dear, and drilling mud velocity of this and I'm reading again, a sonic logging, the sonic velocity in the formation. Sonic velocity in the formation is given this, and drilling mud, in drilling mud the velocity is given 500 only. Okay, which is the lesser, no problem, and critical angle I have to find out, no problem. My dear, critical angle is what? Every student know. I am telling you very basic thing first. If I am talking about the light wave, okay, you have studied in 12th standard. Okay, whenever the light will coming from less dense to high dense medium. Okay, so that will be moving towards the perpendicular, towards the normal.
Okay, this is the concept of light you have studied in 12th. But if I am talking about the sound wave, this is a light wave. I am talking about the sound wave. Sound wave gives the phenomena that is your opposite like a light wave. तो यहाँ पे मुझे sound wave में जो phenomena देखने को मिलता है, that is your opposite or reverse in sound wave. So now you will see कि whenever the wave is coming from less dense medium to more dense medium, so your reflection or refraction you are getting, that will be move away from the normal. But here less dense to high dense, you mean see less dense to high dense, that refracted ray is your move towards the normal. So in sound light wave and in sound wave is you are having a different phenomena. Okay, no problem sir, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है. Okay, so now what is the critical angle? Okay, critical angle is that if you are giving, listen, if you are giving this theta angle, तो this is your theta 2, no problem. This will be approx 80 degree, no problem. If you are giving the angle is you are increasing the angle of incident angle like this. You are like incident angle you are increasing, means like you are seeing like that. This angle will be like, suppose this angle is 20 degree. Now you are having this angle 30 degree, and this refracted angle also increase, means this angle is now like 85 degree. Okay, so now you will see once you are increasing the incident angle, so your refracted angle also increasing. Okay, now next step will be this. When you are having another or more increase in incident angle, okay, incident angle you are increasing more, this is your incident angle, so it will be your like 40 degree now. Okay, so now your ray will be not moving like that will be moving in along the surface. Okay, and the refracted angle will be what? 90 degree, because you are measuring the refracted angle from the refracted wave and the normal, so this will be your 90 degree. So this incident angle is called a critical angle. Okay, at which your refracted angle is 90 degree, that angle is called a critical angle. Okay, at what incident angle your refracted angle is 90, so that incident angle is your critical angle. ये सभी को पता है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है. Okay, this is a very simple concept and each and every student know. Okay, now Lenz's law I know. Sin I upon sin I know this particular formula. Okay, I am writing here, my dear. So you can see sin I upon sin R, or you can say simply sin I means this angle, incident, R means refracted angle, or I means in this particular zone. So velocity also I am taking of this particular zone, means that is your V1, equal to sin R I am writing, and R angle form in this particular zone, and what is the velocity of this particular zone? That is your V2, no problem. Okay, so this is your Snell's law. तो ये एक लॉ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपने बचपन में भी देखा होगा 9th और 10th स्टैंडर्ड में. तो यहाँ पे ये वही चीज़ें यहाँ पे भी आई है. ठीक है, चलिए. सो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट, एंड ही इज गिवन द वेलोसिटी ऑफ. ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ ना, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं इसी चीज़ को एक वेलबोर के अरेंजमेंट में बनाता हूँ. ठीक है, वेलबोर के अरेंजमेंट में बनाता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है, वेलबोर के अरेंजमेंट में बनाता हूँ. आई एम मेकिंग द पिक्चर, आई एम मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट इन वेलबोर अरेंजमेंट. ओके, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर, बिकॉज ही टॉकिंग ना इन सोनिक लॉगिंग. इन सोनिक लॉगिंग में हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारा लॉगिंग टूल है, दिस इज अवर लॉगिंग टूल, नो प्रॉब्लम. ओके, एंड साउंड वेव वी आर ट्रांसमिटिंग, एंड दीज आर द रिसीविंग 1, रिसीविंग 2, नो प्रॉब्लम. ओके, अगर सोनिक लॉग आपने पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल कि देयर इज ए 2 रिसीवर एंड 1 ट्रांसमीटर, और द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट 4 रिसीवर एंड 2 ट्रांसमीटर. Okay, no problem. अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. तो what you will see, there will be mud. Okay, and now the sound wave will go like that. Okay, and there will be normal, and this is your incident angle, and your wave will be like that. Okay, along the surface. This is along the valvor. This is your 90 degree. Okay, so now this is the arrangement. These are the concept I am making in the valvor. Okay, so now what I will see, this is your incident angle.
अपॉन वेलोसिटी v1, इंसिडेंट एंगल कहां बना है, मड में बना है, तो वेलोसिटी ऑफ मड की होगी भाई, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अगेन फॉर्मूला, इंसिडेंट एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ मड की होगी भाई, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ द रिफ्रैक्टेड एंगल कहां बना है, फॉर्मेशन में बना है, सो व्हाट आई विल द वेलोसिटी ऑफ v2 विल बी वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन, तो v2 विल बी योर वेलोसिटी विल बी योर ऑफ फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला, नाउ यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू, sin I have to calculate, okay, V mud you are having or not, yes, just tell me। यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लेना, a very important points I am telling you कि if your sound velocity is moving, okay, sound wave is moving and the velocity of sound wave will depend on the density of the formation, okay, जिसमें वो मूव कर रहा है, okay, and the velocity will depend if the density of the medium is higher, so velocity of the sound wave also higher। so मेरे भाई mud has the very less density, so it means mud in the formation velocity is higher and in mud velocity is very very low, okay, no problem। so I am writing very quickly, you will write 500 and sin r will be over 90 degree, so I am writing this 1, okay, and formation is over 5000, okay, 5000 or 50,000, no problem। so now I will take the calculator, so now I will write what, sin I equal to 500 upon 50,000, okay, 50,000, okay, so now it will be cut it like this, so sin I equal to 5 upon 500, you will see 0.01, okay, 0.01 in what, 0.01, and now I am taking the angle equal to, this will be your sin inverse 0.01, so now you will see sin inverse 0.01, you will see my dear, angle will be in degree 0.57.29, this will be degree angle in degree, okay, but I want to calculate in radians, he is talking about the in radians, I know angle will be in radians, I will multiply pi by 180 degree, so you will get what, you will get multiply by pi, okay, and divide by 180 degree, so you will get 0.010, that means you can say 0.0, okay, this will be your right answer, okay। so now you will see the right answer, and right answer I am telling you, this will be the right answer, okay, means 0.0099, okay, so you can write 0.01, okay, so 0.01 the right answer in radian, okay, no problem। so I think you got it। next question you will see, this is your next question I think, and then the lecture will over, okay, of GATE 2016, then we will talk about the question which has been asked in GATE 2017 from the formation evaluation, okay, this is a very simple question you will see, and the section of clean sandstone reservoir were logged and found a porosity value, okay, this is the question which is based on the Archie equation, and I am telling you Archie equation is very very important, maximum time the question if you will see from the formation evaluation in your GATE, that will be based on the Archie equation, okay, no problem। so a section of clean sandstone reservoir was logged and found to have porosity, okay, porosity I am having, no problem, porosity I am having 0.10, okay, this is in fraction, okay, the cementation factor and n, okay, m equal value is also 2, n value also 2, no problem, the constant a value is 1, and the formation water resistivity means resistivity of formation water, that will be 0.03, it's a formula based question, very simple question, unit will be ohm meter, the formation resistivity means RT is given 10 ohm meter, the formation water saturation I have to calculate, means water saturation I have to calculate, okay, no problem। the thing is that sir, in resistivity log, the main application of the resistivity log is to calculate the formation water saturation, okay, it's a main application of resistivity log, okay। some students say that sir formation resistivity log application is to calculate the resistivity, or no, the main application to calculate the water saturation of the resistivity log, okay, ये बात अलग है कि वो कैलकुलेट करेंगे resistivity मेजर करने के बाद ही, but main application is your to calculate water saturation, okay। so water saturation I know the formula, water saturation equal to, okay, I know the formula, this is your n, okay, and now you will see the F A R
W upon RT, okay, water saturation equal to, now I am putting N, I am breaking the F value, A upon 5 to the power M, this is your RW and this is your RT, and water saturation equal to, now I am putting the value, N value is 2, okay, and A value is given 1, 5 value is given 0.10, M value is given 2, RW value is given 0.036, okay, and RT value is given 10, okay. Now I have to calculate, you will get the answer. Simple thing is that, and I have to calculate the water saturation in percentage, not in fraction. Then I will multiply by 100, no problem, okay. Chaliye. So now what I will do, 0.036 divide by 0.10 divide by 0.10 divide by 10, okay, and then I will take the under root. Then I will take the under root, okay. I will take the under root. So you will get what? 0.6. You will get 0.6. So this is the percentage of water saturation. So in fraction, I want to calculate in percentage. So it will be multiplied by 100. So it will be your 100%, 60% your water saturation. And sometimes he can ask also to calculate your oil saturation or hydrocarbon saturation. So you will see what 1 minus water saturation. 1 minus water saturation means 1 minus 0.6, and it means for hydrocarbon saturation will be 0.4 or in percentage 40%. So कुछ भी पूछ सकता है, आंसर यू कैन सी, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल सी द क्वेश्चन which has been asked in GATE 2017 from the formation evaluation, my dear. Okay, thank you very much, have a nice day.